Good afternoon, students. Myself introducing to you, Alok Chakraborty. I am a faculty member of ICAI, both for Cost Institute as well as Chartered Institute. I am in this profession for last 35 years and nearly 80,000 students I have taught so far in my tuition center. Myself is a cost accountant and a graduate from St. Xavier's College, Kolkata. I started my career as a practicing cost accountant. However, afterwards, as my passion is teaching, I switch on to teaching line. However, I have a firm also doing the cost audit related work in different sector of the industry. My specialized subject is management accounting and cost accounting for CMA final, CA final and for CIMA courses. Many of my students are in big positions of different companies. Some of them are already in the director level of Reliance, HDFC Bank, and some of them already became the director of the Big Four audit firm all over India. However, that is their credibility. I want to show my credibility while teaching you the subject, as I will show you in the demo class in a very nutshell manner. And if you join with me, hopefully you'll join, I'll teach you the subject line by line, paragraph by paragraph, subject by subject, so that cost accounting will be very easy for you in the future. Thank you. Wish you all the best. Let us start the demo class by sitting, making a lecture over my chairs over there. Thank you. Good morning to the final students. As we discussed in our syllabus discussion part, that there is a portion in the syllabus known as QT or Operation Research. QT or Operation Research, it was developed by different mathematicians during last 80 years, and we have to apply it. We have to apply it mechanically. We have to apply it mechanically to solve many day-to-day problems. Many day-to-day problems. For example, in a factory, on a particular day, they receive 4 jobs, and it will be done by 4 labor. It will be done by 4 laborers. 4 जॉब 4 लेबर से अलॉट करना होगा. Obviously, the objective is to minimize
total labor cost or time. टोटल लेबर कॉस्ट और टाइम कैसे मिनिमाइज किया जाएगा, बिकॉज एज द कॉस्ट रिड्यूसेस मैनेजमेंट का ज़्यादा प्रॉफिट होगा. सो मैनेजमेंट वांट्स टू नो दैट व्हिच वर्क शुड बी अलॉटेड टू व्हिच लेबर इन सच ए वे दैट द टोटल कॉस्ट और टोटल टाइम इज मिनिमाइज्ड, so that the delivery is prompt as well as the cost is minimum. So for this purpose we have to apply the theory of assignment. Theory of assignment. Where the original subject is a programming, but the programming is not required in our case. The mother subject is known as linear programming problem, LPP, which is a different chapter in our syllabus जो हम लोग बाद में पढ़ाई करेंगे. It's the mother chapter, totally programming and how to run the program that we have to learn. But on this chapter we have to just apply the mechanical part of the assignment. इधर कोई प्रोग्रामिंग का बात नहीं है, एकदम मैकेनिकल रूल, एंड इन सम केसेस कोई लॉजिक भी अप्लाई नहीं होगा. जस्ट एक वर्टिकल लाइन खींचो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, समथिंग लाइक दैट. सो अगर तुम हमको पूछोगे सर इसमें लॉजिक क्या है, हम बोलेंगे लॉजिक इज नॉट रिक्वायर्ड इन सी फाइनल. अगर तुमको लॉजिक देखना है देन गो टू प्रोग्रामिंग सेक्शन एंड यू विल फाइंड इट. बट हम लोग को लॉजिक नहीं चाहिए, हम लोग को हाउ टू अप्लाई इट इन ए डे टू डे बेसिस. जैसे फैक्ट्री होता है, सिमिलरली वी कैन थिंक ऑफ से जेट एयरवेज कंपनी का 3 एरोप्लेन है, 3 एरोप्लेन, 1 इन दिल्ली एंड 1 इन मुंबई एंड 1 इन चेन्नई. 1 in Delhi, 1 in Mumbai and 1 in Chennai. And they have to run through the, say, 8 different cities of India. 3 एरोप्लेन है, सुबह 6 बजे 3 एरोप्लेन अवेलेबल, और पूरा दिन में ये 8 डिफरेंट सेंटर में घूम के आएंगे. So how the 3 aeroplane should be arranged in such a way that the total cost of the company is minimum. That is another practical application of the assignment. Or as a article clerk तुम सुबह ऑफिस गया, ऑफिस जाते ही ऑफिस से बोल दिया दैट आज तुम्हारा सिटी का डिफरेंट 4 एरिया में 4 क्लाइंट को विजिट करके शाम को ऑफिस में आकर रिपोर्ट करना. 4 एरिया में 4 डिफरेंट क्लाइंट को विजिट करके ऑफिस में आके रिपोर्ट करना. हाउ इट कैन बी डन? तो ऑफिस से तुम जब असाइनमेंट लोगे, तुम एक तो मेंटली जो 4 क्लाइंट को हम कैसे विजिट करने से मेरा टोटल टाइम मिनिमम होगा, एक तो प्लान हमको बनाना होगा. इन दैट केस ऑल्सो वी अप्लाई असाइनमेंट. सो दिस आर द वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन. शॉप फ्लोर, फैक्ट्री में, डिपार्टमेंट में, फैक्ट्री डिपार्टमेंट का दूसरा नाम ही है शॉप फ्लोर. एक शॉप फ्लोर में हाउ द लेबरर्स विल बी अलॉटेड विद डिफरेंट जॉब्स. फर्स्ट अलॉटमेंट. and airline company, how to move the aircraft from one place to another, that is the second objective. So that the जितना सारे पैसेंजर लोग हैं, all passengers will be served properly, and in this process कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो. और एज ए आर्टिकल क्लर्क तुमको अगर 4 प्लेस विजिट करना है, then how to visit the places so that the total time is reduced and total cost is reduced. अगर तुम टोटल कॉस्ट को कम कर पाओगे, देन तुम्हारा जो डेली अलाउंस मिलता है उससे तुम्हारा ही थोड़ा प्रॉफिट रह जाएगा. So in this way, how attractively we can make our assignment. इसके लिए कुछ मैकेनिकल रूल है. What is that mechanical rule?
First of all, definition. Assignment implies allocation of jobs. Allocation of jobs among the workers of a machine. The objective is to minimize the total cost or time. Total cost or time को minimize करना ही objective है. Subject to the condition that one worker, एक particular condition है, one worker can do only one job. 1:1 condition. तो तुम बोलोगे सर एक लेबर को क्या 2 जॉब नहीं दिया जाएगा. But that is a problem under dynamic programming, which is not a part of our syllabus. In our final courses, only linear programming is included, and once you cross the final and you go to the higher segment of study, then you will find that along with the linear programming, there is one chapter known as dynamic programming. पर अभी हम लोग linear programming में रहेंगे, exam oriented basis से only one job can be allotted, so that the number of jobs must be equal to number of workers. The number of job अगर number of workers equal है, then we call it a square matrix. How a square matrix is formed? सर ये square matrix क्या चीज़ है? इसमें क्या मैट्रिक्स का एप्लीकेशन है? एकदम नहीं है. There is no matrix application. तुम भूल गया तो भूल जाओ, इसमें कोई काम पे नहीं लगता है. If we take a very simple example, suppose there are two labor P and Q with jobs of 1 and 2. There are 2 job and 2 labor. अगर लेबर को जॉब अलॉट किया जाएगा, उसके लिए एक तो खर्चा होगा रुपीस में. जॉब 1 अगर P को दिया जाएगा तो कंपनी का 50 रुपीस खर्चा है. अगर जॉब 1 Q को दिया जाएगा, then the expenditure is 37. Whereas job 2 अगर P को दिया जाएगा, the expenses will be 27. And job 2 अगर Q को दिया जाएगा, then the expenditure is 48. So we find there are 2 rows, first row and second row, as well as 2 column, first column and second column. So we call it 2 row into 2 column. When row and column are equal, we call it a square matrix. So it is a square matrix. बस इतना नाम जानना ही जरूरी है. So number of job is equal to number of labor होना पड़ेगा. And इसको हम लोग बोलता है it is a balanced problem. इसको balanced problem बोला जाता है. So read the theory again. Assignment implies to allocation of jobs among the workers or machines. The objective is to minimize total cost or time, subject to the condition that one worker can do only one job. So the number of jobs must be equal to number of workers. This is a square matrix, and this is called a balanced problem. The balanced problem means number of row and number of column are equal. अगर number of labor and number of job equal नहीं है, then we call it an unbalanced problem. So in case of an unbalanced problem, the number of job is not equal to the number of workers. Then introduce a dummy row or dummy column. Either एक तो dummy job और नहीं तो एक तो dummy worker को लेके आओ. Suppose एक तो problem दिया गया, we have given a problem like a different manner.
job 1, 2, 3 and labor P and Q. And in this case they have given you in hours. 1 का अगर P दिया जाएगा तो 3 घंटा, 1 को Q, जॉब 1 इज गिवन टू Q तो लेंगे 5 घंटा. P का अगर 2 दिया जाएगा तो 7 घंटा, 2 Q को दिया जाएगा तो 1 घंटा. जॉब 3 P को दिया जाएगा तो 1 घंटा, जॉब 3 Q को दिया जाएगा तो 4 घंटा. तो here we find that a hour matrix among the job and labor, जॉब 1 P को दिया जाएगा तो 3 घंटा, Q काम करेंगे तो 5 घंटा लेंगे. जॉब 2 के लिए Q टेक मिनिमम टाइम 1 hour, बट P लेंगे 7 घंटा. Q has the specialized effect on job 2, whereas job 3 P को दिया जाएगा तो P will take 1 घंटा, Q will take 4 घंटा. But we have 3 rows and 3 row and 2 columns. Three and 2 column, it is an 3 row and 2 column is an unbalanced problem. So we need a dummy labor. जिसके लिए टाइम रिक्वायरमेंट इज 0, 0, 0. डमी मीन्स जिसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, एसेक्ट लेबर चाहिए और उसके लिए टाइम रिक्वायरमेंट इज 0. सो लेट अस चेक द थ्योरी अगेन. In case of unbalanced problem, the number of job is not equal to the number of workers. So to introduce a dummy row or column so as to make the matrix square, the elements of the dummy are 0. Dummy के लिए जो भी आएगा सबका एलिमेंट 0 माना जाएगा. यह problem. तो first the problem characteristic, what type of problem it is and what are the practical application. पहले ये part clear करो. Now the solution technique, there are 2 solution techniques. One is visual check and one is Hungarian method. Visual check, we should apply it for a small problem up to 3 by 3. 3 रो 3 कॉलम, ऐसा छोटा छोटा प्रॉब्लम है. एग्जाम में 3 by 3 प्रॉब्लम बहुत ही कम देता है. और एग्जाम में जनरली 5 लेबर, 5 जॉब, 6 बैट्समैन एंड 7 पोजीशन, 6 बैट्समैन है और 5 पोजीशन है. तो हाउ दे अलॉट द बैट्समैन so that the team score is maximum. तो ऐसा बड़ा साइज का प्रॉब्लम होता है. बट क्वेश्चन में अगर ऐसा छोटा साइज का प्रॉब्लम देंगे 3 by 3, तो हम लोग विजुअल चेक, जिसका आराम से हिंदी हो सकते हैं, विजुअल चेक का हिंदी आंखों देखा हाल. दैट मीन्स जस्ट बाय ऑब्जर्विंग of the problem you can see the solution. And the second one is the Hungarian method, जिसका दूसरा नाम है मैट्रिक्स रिडक्शन मेथड और तीसरा नाम है फ्लैट्स मेथड. जो साइंटिस्ट ये मेथड को इन्वेंट किए थे उसका नाम था मिस्टर फ्लैट, और मिस्टर फ्लैट इज फ्रॉम हंगरी. तो इसीलिए वो अपना फादरलैंड से इसका नाम दिया हंगेरियन मेथड. और ये एक तो सब्ट्रैक्शन मेथड से होता है, इसीलिए इसका नाम है मैट्रिक्स रिडक्शन मेथड और फ्लैट्स मेथड. एग्जाम में मैक्सिमम टाइम हंगेरियन मेथड ही बोला जाता है, नॉट द फ्लैट्स मेथड्स एक्सेट्रा. द मदर और मेन सॉल्यूशन टेक्निक इज नोन एज लीनियर प्रोग्रामिंग, जो थोड़ी देर में ही बोला. मदर सिंप्लेक्स मेथड. सिंप्लेक्स मेथड इज द पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ एलपी. असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये भी एक चैप्टर है तुम्हारा सिलेबस का. असाइनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन आर द डिराइव्ड सॉल्यूशन ऑफ सिंप्लेक्स मेथड. ये डिराइव्ड सॉल्यूशन है, हमको ओरिजिनल सॉल्यूशन अप्लाई करना नहीं है इधर, हमको जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव को चाहिए. सो इफ द प्रॉब्लम आस्क फॉर ए असाइनमेंट सिंप्लेक्स मेथड, then we have to solve it by Hungarian method.
क्वेश्चन अगर बोलेंगे दैट सॉल्व इट बाय असाइनमेंट सिंपलेस्ट मेथड, नाम देख के घबराने का कुछ है नहीं, बिकॉज इट इज प्योरली एन असाइनमेंट मेथड ऑफ सॉल्यूशन. तो फर्स्ट हम लोग अप्लाई करें विजुअल चेक. हाउ टू सॉल्व इट बाय विजुअल चेक मेथड. इफ यू लुक एट द प्रॉब्लम, वेरी सिंपल सम, विजुअल चेक मेथड. ऐसे अलॉट है दैट कंडीशन याद रखो, एक लेबर एक जॉब कर सकते, वन लेबर कैन डू ओनली वन जॉब एंड द टोटल कॉस्ट और टाइम शुड बी मिनिमम. सो जस्ट यू हैव थिंक मैथमेटिकली दैट हाउ कैन आई डू इट. अगर जॉब 1 क्यू को अलॉट किया जाएगा तो 37 खर्चा, एंड जॉब 2 अगर पी को अलॉट किया जाएगा तो 27 खर्चा. एंड सोच के देखो, ये दोनों से और कोई खर्चा कम हो नहीं सकता. सो सॉल्यूशन बाय विजुअल चेक, सॉल्यूशन बाय विजुअल चेक. जॉब 1 फॉर लेबर क्यू, जिसके लिए खर्चा होगा 37 रुपया, and job 2 for लेबर P 27 रुपया खर्चा होगा. तो टोटल मिनिमम कॉस्ट इज 64 रुपीज. टोटल मिनिमम 64 रुपीज, दैट इज आवर लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट इन दिस केस. यह simple solution of visual check which is applicable in case of a 2 by 2, 2 row 2 column or 3 row 3 column problem. If I want to solve it by Hungarian method, then what I have to do? First check the rule by Hungarian method. What is Hungarian method? Hungarian method is applicable when it is a balance problem. अगर balance problem नहीं है तो we cannot apply it. Steps for a balance problem. Balance problem means number of row and number of column must be equal. Row subtraction, first step का नाम. Select the रो सब्ट्रैक्शन है, एग्जाम में तुमको लिखना पड़ेगा तो पास में लिख देना रो सब्ट्रैक्शन. सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट रो. प्रिपेयर ए न्यू टेबल, डोंट रीड इट नाउ. ये एप्लीकेबल होगा डिफरेंट टाइप ऑफ सम में, तो जितना भी हमको चाहिए उतना ही पढ़ेंगे, पर के एप्लीकेशन करेंगे. सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो एंड सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट रो. तो लेट अस चेक इट. स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो, सो लिखना पड़ेगा अप्लाई. एग्जाम पर्पस भी ऐसे लिखना होता है, अप्लाई रो सब्ट्रैक्शन. इतना ही वर्ड काफी है. रो सब्ट्रैक्शन बोलने से हो जाता है. तो फर्स्ट रो का स्मॉलेस्ट नंबर है 37. वी आर गेटिंग टू ए न्यू टेबल, सो टेबल 2. ऊपर का टेबल है टेबल 1, टेबल 2. तो 37 इज द स्मॉलेस्ट नंबर हियर. तो 37 से सब्ट्रैक्ट करो. मैक्सिमम तो ऐसे एक सर्कल दे सकते हैं. So it is 13 and 0. First row. Take the smallest number of each row and subtract it from all the elements of that row. Second row में smallest number is 27. So this will be 27 minus 27. Just first sum बोल के हम लोग लिख रहा है 27 minus 27 0. And second line is 48 minus 27. 48 minus 27, that comes 21.
So that is the rule of row subtraction. So again, our first rule is take the smallest number of each row and subtract it from all the elements of that row. In this process, prepare a new table. एक new table में जाओ. Rule 1, Rule 2, new table. Select the smallest element of each column wise in the new table and subtract it from all the elements of that column. तो देखो रो का ही सेम रूल, रो सब्ट्रैक्शन बोला रो वाइज सब्ट्रैक्ट करो, कॉलम सब्ट्रैक्शन बोल रहा है कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट करो. Select the smallest element of each column in the new table and subtract it from all the elements of that column. If 0 is present in all the columns, then do not apply this rule. अब देख रहे हैं 0 application. So every column हाथ ऐसे करो, every column का रो होने से बाउंड्री, कॉलम होने से ऐसा, every column का मिनिमम नंबर लेके सब एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करो. तो हम लोग जो न्यू टेबल आया, ऑब्वियसली न्यू टेबल में देखो फर्स्ट कॉलम में कितना है, ऑलरेडी 0 है. ये जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में ऑलरेडी वी हैव 13 0. सो 0 इज द मिनिमम. सो 0 से सब्ट्रैक्ट करने से नो चेंज. 13 0, 13 से 0 लेस करने से 13 ही रहेगा. और इधर 0 21, इधर भी 21 से 0 लेस करने से 21 ही रहेगा. तो इसलिए रूल बोल रहा है that if 0 is present in all the columns, then do not apply this rule. तब जाके ये रूल एप्लीकेशन करने का कोई जरूरत नहीं है. सो जस्ट लिखना पड़ेगा कॉलम सब्ट्रैक्शन नॉट required as 0 in all the columns. Rule 3. एक सॉल्यूशन बेसिकली 1 2 3 4 5 रूल में खत्म होता है. तो अभी तक हम लोग थोड़ा रूल 3 तक ही देखे एज ए डेमो क्लास. Strike out all the zeros by drawing all word already underlined by drawing minimum number of straight lines along the rows or columns, that is horizontal or vertical lines only. So to minimize the number of lines, select that row or column first where maximum number of zeros are there. So क्या बोल रहा है again? स्ट्राइक आउट, इस मेथड का नाम ही है स्ट्राइक आउट मेथड, और हिंदी में हम बोल सकते हैं काटा लगाओ. स्ट्राइक आउट ऑल द जीरोस, जितना जीरो है सबको काटो. कैसे? बाय ड्राइंग लाइंस, आइदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली लाइंस ड्रॉ करके काटो. डायगोनल लाइन ड्रॉ करना डिसअलाउड है, एंड मेरा ऑब्जेक्टिव है ऐसा नंबर ऑफ लाइन को मिनिमम रखो. कैसे हो सकते? देखो एक बार फर्स्ट सम. सो वी फाइंड हियर दैट देयर आर 0 इन फर्स्ट रो एंड सेकंड रो. सो अगर एक स्टूडेंट सोचेंगे हम ऐसे काट, ओह सॉरी 13 0. अगर एक स्टूडेंट सोचेंगे आई स्ट्राइक आउट द जीरोस लाइक दिस, they are allowed to do it. एजेंट बोलेंगे नो सर आई वांट टू ड्रॉ लाइक दिस, एक तो रो वाइज एक तो कॉलम वाइज. हम बोले ओके नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज अलाउड. ऑरिजिन बोलेंगे ना सर हम दोनों ही कॉलम से ड्रॉ करेंगे. एग्रीड, दैट इज ऑल्सो नो प्रॉब्लम बिकॉज आई नो दैट ऑल मेथड में सोल्यूशन आ जाएगा. ऑरिजिन बोलेंगे ना सर हम लेंगे सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो. ओके दैट इज ऑल्सो अलाउड. बट जैसे ही तुम ड्रॉ करो, द मेन पर्पस इज दैट 2 zeros आर ऑलवेज देयर.
So when two zeros are always there, we have to write, two lines are always there, so you have to write as all the zeros, basically two zeros, are strike out by two lines, which is equal to number of row. मेरा नंबर ऑफ रो भी 2 है, number of rows is equal to 2, then the solution or then the table is feasible. फिजिबल वर्ड का मीनिंग है जहाँ से फाइनल सॉल्यूशन आ सकते हैं. द टेबल इज फिजिबल, जहाँ से फाइनल सॉल्यूशन आ सकते हैं. अब फाइनल सॉल्यूशन कैसे आएंगे? व्हेन यू कम टू द क्लास विल डिस्कस इट इन डिटेल, बट दिस इज अ वेरी सिंपल टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग. एग्जाम में आएगा तो 8 मार्क्स इज ए श्योर शॉर्ट स्कोर. थैंक यू वेरी मच.